Cover two or three topics: air embolism, hemodynamic disturbances during elective neurosurgery, and then positioning. These are all related or linked to the positioning. So let's start with the air embolism. So air embolism uh, is as the name specifies, air within the vessel. So venous air embolism are the embolic structures, primarily the entrained air that enters into the venous system of a patient. So air in the veins, that is the venous embolism. So how what's the incidence? Incidence is unclear because the studies we have which tells us about the incidence of venous air embolism depends on the technique which they used to detect the incidence of venous air embolism. So one study shows that the incidence is around 21 to 40% in sitting neurosurgery or ENT procedure. Another study suggests it is a 50% in semi-sitting craniotomies, and study says its incidence is as low as 1.6 and as high as 93. So incidence is not clear. It all depends on the method uh, used to detect this embolism. So what's the lethal dose to required to produce a sign or symptoms? The lethal dose is around 200 to 300 mils. If we say in mils, it's 3 to 5 ml per kilogram. More important to that, the dose is the speed of air in treatment. If you just give a bolus of air like 200 to 300 ml straight forward, this will straight lock the right ventricle and obstruct the right ventricular and straight into patient goes into cardiac arrest. But if air entrain like in increments 1 ml per minute or 1 mil or 2 mil in 3 to 5 minutes, then the symptom signs and symptoms would be different. So speed of air is more important rather than the total dose or lethal dose. So what's the pathophysiology? So we air enters through SVC or IVC into right atrium, then right atrium to the right ventricle. If it is in the bolus 200 to 300, straight block the right ventricle. If it's in increments, then it will goes into pulmonary vessels where it leads to increase in pulmonary arterial pressure, then right ventricle after load or right ventricular failure kind of. The other thing is if the air is coming in increment, then it can cause airway pulmonary vessels inflammation and pulmonary vasculitis kind of. So if we look at this, airlock obstruction to pulmonary blood flow and intense pulmonary vasoconstriction leading to rapid increase in right ventricle after load, increase in right ventricular oxygen consumption, and ultimately failure. So increased PVR, increased pulmonary artery pressure, increased right ventricular and diastolic pressure, and increased right atrial pressure kind of ultimately lead to right heart failure. Clinical sign and symptoms: if the patient is awake, then patient can present with diffuse pulmonary wheezing, cyanosis, hypotension, arrhythmias, Millville murmur if you auscultate, or cardiac arrest. There are different how to grade the venous air embolism or sign and symptoms. So there are different grading system, but most popular is Girard scale of venous air embolism. It uses 4 points: precordial Doppler, hemodynamic alteration, pulmonary artery pressure, and end tidal CO2. So what we can see or appreciate in the theaters, we can start detecting it when the patient is having grade 3 arterial blood pressure, decreases more than 20 or more than 20% increase in heart rate, or plus one of these symptoms, end tidal CO2 more than 3 millimeter of mercury. And grade 5 is complete cardiac collapse. So it's difficult for us to do grading within the theater as we don't have all the gadgets to detect it or grade it. So what's the methods to detect it? So different methods have different sensitivity. The sensitivity depends on the ml per kilo. So most sensitive is intracardiac transesophageal echo. Every sy- every method has, or each method has a limitation. So intracardial TE, so high technical expertise, limited availability, highly invasive. Then transesophageal echo and precordial Doppler both have same sensitivity. Around like TE is more sensitive, 0.02 ml per kilo can detect. And again, expertise required, expensive, invasive, not quantitative.
Then precordial Doppler, sensitivity is high, can detect up to 0.05 mil per kilo. Again, limitations are obese patient in intravenous mannitol can mimic air embolism, electrocautery interference. Then pulmonary artery catheter, transcranial Doppler. These are all required expertise. Then two other methods which we routinely use in theater, end-tidal nitrogen and end-tidal CO2. Both can detect up to 0.5 mil per kilo uh, in trained air. But both have limitations. If the patient is hypotensive, then it can become unreliable. And if we are using nitrous, then end-tidal nitrogen is not significant. And other parameter, oxygen saturation or ECG, both has low sensitivity. So these are the methods to detect venous air embolism. And incidence, again, incidence depends on the technique which we are using to detect this embolism. So treatment, first of all, if you think that patient is or suspecting patient is having venous air embolism, first of all notify the surgeon, flood the field with saline, and if there is any open sinuses, apply bone wax, like close the entrainment sources, manual compress venous structures like jugular vein, you just apply the pressure. If patient is become unstable, you can put a CVC to remove entrained air in a triangular position. If you're using nitrous, just turn it off, and all you can do is hemodynamically support the patient, aggressive fluid resuscitation, FIU to 100% or pressors. So this is all about venous air embolism. The next, our topic is hemodynamic disturbance during elective neurosurgery in adult. So this is a question from problem oriented. The question says, while the surgeon is resecting tumor from near the brainstem, the patient's heart rate suddenly drops to 20 beats per minute. What is your assessment and management? Though question is from problem oriented, but the answer is totally different from problem oriented. Two things. Surgeons is operating near the brainstem and heart rate. The second thing is heart rate drops to 20. So it's the bradycardia. There are multiple causes for bradycardia during elective neurosurgery. The most common and most studied is trigeminocardiac reflex. We'll only talk about this reflex in detail. The next is glossopharyngeal vagal reflex. Then is Bizol-Jarisch reflex. It's a cardio inhibitory reflex. If the patient is hypovolemic, and the patient can present with hypotension and bradycardia. Then venous air embolism. Irrigation with warm and cold saline, temperature shock. There are different theory or different mechanism for this. But if the patient, you irrigate the operating area with saline, then there can be a chances of bradycardia and hypotension during surgery. Increased parasympathetic tone, changes in intracranial compliance. If surgeons is operating for hydrocephalus or put in a EVD and drain around 400 or 500 ml or 200 ml CSF, there can be hemodynamic disturbance. Then is drug induced. If the patient, we are giving anti-epileptic phenytoin during surgery or mannitol, there can be a chances of bradycardia. Or we are using dexmedetomidine intraoperative or remifentanil. These are all can cause bradycardia. Then there are systemic causes. So there is a list of things which can cause bradycardia during neurosurgery. So as I said, we'll talk about only trigeminocardiac reflex. This is the most important and most studied reflex in neurosurgery. It presents at acute onset of bradycardia and hypotension, like within seconds, during stimulation of any branches of the trigeminal nerve. It is often associated with asystole, gastric hypermotility, and apnea. So 5 features: bradycardia and hypotension. These are 2 hemodynamic parameters. And the other things, high systole, gastric hypermotility, and apnea. This picture is a little bit blurred. So afferent pathway is through trigeminal nerve, and afferent pathway is through trigeminal, and efferent is through vagus nerve. Afferent pathway, so 3 component: peripheral, Gisserian ganglion, and central. Peripheral is
three branches of trigeminal: ophthalmic, maxillary, mandibular, all ending in Gazarian, and then through central component of the nerve to the fifth nerve nucleus, and then it interlinked with the vagus nerve nucleus and efferent through vagus. So classically, there are three types of trigeminal nerve, depending on the stimulation of the part of the nerve, like peripheral through ophthalmic, maxillary, or mandibular, Gazarian through stimulation of the Gazarian ganglion, or central through the central component of the trigeminal nerve. But recently, this classification has been changed. So Leon uh, reorganized this classification and classified on on the basis of type and class. Type or again depend on the stimulating branch, like ophthalmic, maxillary, and mandibular, and call it a moxillocardiac, maxillocardiac, or mandibular cardiac reflex. And class is, as we said, the most important components are acute onset of bradycardia and hypotension. So hypotension and bradycardia, class depends on hypotension and bradycardia. If the initial change is bradycardia or heart rate, then it is a class A TCR. And if the mean arterial pressure changes before heart rate or before bradycardia, then it is a class B TCR. The next hemodynamic disturbance is hypotension during neurosurgery. When we label it as a hypotension, decrease in mean arterial pressure 20% or more from the baseline or MAP less than 60, then we label it as a hypotension. The reasons are massive blood loss, surgical positioning, sitting or prone, perioperative use of osmotic therapy like mannitol or hypertonic saline, then various cranial nerve reflexes as we studied, then venous ear embolism, anaphylaxis, cardiac dysfunction, if the patient is having any problem, or a history of ischemic heart disease, or the patient with pre-existing conditions like hypertension or cardiac disease or on various medicines. These all lead to hypotension during neurosurgery. Then hypertension. When we label it a hypertension, 20% increase in systolic pressure from the baseline or MAP higher than 90 millimeter of mercury. Intraoperative causes are skull pins fixation, then periosteal elevation during surgery, dural opening, brain traction, or surgical manipulation of the medulla oblongata. Like there are cardiovascular control center in the medulla oblongata. When they are performing surgery near that area, then there are chances of blood pressure surges, and then Cushing reflex, hypertension, and bradycardia. Other arrhythmias, this is also the hemodynamic disturbances. So coronary vasospasm, there are chances of coronary vasospasm if there is a central mediated sympathetic surges. Inadequate anesthetic depth, vagal stimulation, again, brainstem reflexes can cause arrhythmias. And there are case reports of mannitol-induced hyperkalemia that can lead to arrhythmias. The reason behind rapid infusion mannitol can either result in hyponatremia or hyperkalemia, like intra or extracellular shift of electrolytes. So our next topic is positioning during neurosurgery, which is very important. Both principle. There are four principles. So this is a very lengthy topic: positioning and position-related injuries. So first we will discuss principle of positioning and then a couple of nerve injuries. So first of all, positioning of principle of positioning. The first thing is preference. What is the preferred position for surgery, which gives the optimal surgical access to the patient? The other thing is the second point, practical consideration, whether practical it is possible or not. Then the physiological consequences. What are the physiological effects of that positioning? And then the physical injuries. So we'll discuss in detail about these principles. So preference, first of all, first point. So five classical surgical approaches: frontal, temporal, based on the location and position, frontal, temporal, occipital, parietal, and posterior fossa. Then there is a modern neurosurgical standard types. So these are anterior
parasagittal, frontocephalotemporal, etc., etc. So these are the preferred neurosurgical positions. This is the preference. So practical consideration. Second point, practically nowadays they are doing neuronavigated guided by neurosurgeries, like in which they use neuronavigation. For that, they need a fixed head. They use a Mayfield skull clamp just to fix the head uh, to do that neuronavigation. So Mayfield skull clamp is one aspect in neurosurgery. Then the patient factors. First point regarding patient factors, what is the weight limit of the table? Not all patients can bear obese patient. So weight limit of the table is one patient factor. Second point, do we have enough number of people, or is there enough number of people to do position safely? Third point, do we have positioning aids? Fourth thing, should consideration be given to positioning the patient awake prior to induction of the anesthesia? So this is the point, like whether we need to do the position awake or after induction. Sometimes position is not possible after induction. So this is also a consideration. And then last point is dimensions of the frame and table adequate to prevent abdominal compression. So these are the patient factors. Then anesthetic factors. Can we keep securing the airway during that position, venous access, monitoring aspects, and eye protection? We need to look after these points as well. Then third point was the physiological consequences of the position. Physiological consequences, first one is airway. Like prone positioning, if they're doing neurosurgery in prone position for 7 to 8 hours, then there are like facial edema and potential airway edema like this. So airway should be assessed prior to extubation with consideration of delayed or stage extubation if necessary. And always check for air leak around the tube if you are extubating and after a prolonged prone surgery. Then there are cardiovascular physiological changes. Most of the cardiovascular physiological changes are primarily related to the venous return, like patient are anesthetized, decrease in sympathetic outflow, or the patient is in sitting position or reverse triangle guard position. Then there is a pooling of blood in the dependent areas that can lead to hypotension intraoperatively. The other thing is if the head is lower than the heart, then the venous return of the upper body will be impaired. That can likely lead to increase in ICP, cerebral edema, or decrease in cerebral perfusion. Then the cerebral hemodynamic and ICP. So at what level do we need to monitor invasive blood pressure while doing the neurosurgery? So there are two references point. One is the right atrium, and the second point is uh, the foramen of Monro, or the tragus, air tragus. So when patient is supine, right atrium or foramen of Monro or air tragus are at the same level. So map at the right atrium and foramen Monro are same. So map at 70 of 75 at right atrium is equal to map of 75 at foramen Monro. So any change in between these two references point can lead to alteration in map value. Like if there is a difference of 10.2 centimeter, there will be a above or low, there will be a difference of 7.5 millimeter of mercury of map. So for example, if the reference point right atrium and foramen of Monro, there is a 45-degree inclination or head up position, or say there is a difference between two reference point 30.6 centimeter, and transducer is placed at the level of heart or right atrium and measuring 75 millimeter of mercury of blood pressure. But when we do the calculation based on this formula, the map at the foramen Monro would be around 52. And if the patient is having ICP of 10, the cerebral perfusion pressure is 42, which is really compromised. So we need to consider this point if we're doing the invasive blood pressure monitoring.
The other thing is in positioning, impaired cerebral venous drainage. If we tie it like with a knot or with a tube tie, uh, it's like very tight around the neck. It's obstructing the venous drainage. Then it can lead to impaired venous drainage, which ultimately can lead to raised ICP and decreased cerebral perfusion, or this, most importantly, sometimes due to our endotracheal ties, there is increased bleeding because of back pressure through the venous drainage. The other point is avoidance of high ventilation pressure, neutral neck position, head uplift of 15 to 30 degree. The fourth point is physical injuries. So three types of injuries are of particular interest during positioning. One is pressure ulceration, peripheral nerve injury, and postoperative visual loss. So we'll discuss only perioperative peripheral nerve injury here. So the reported incidence of peripheral nerve injury is around 0.03% to 0.14%. And the factors associated with nerve injuries are hypovolemia, dehydration, hypotension, hypoxia, electrolyte disturbance, and induced hypothermia. If the patient is having these factors or these abnormalities during surgery, then there is an increased risk of peripheral nerve injury. Ulnar nerve. The most common peripheral nerve injury is ulnar nerve. 28% of all anesthesia-related nerve injury malpractice claims. So it commonly present after 24 hours, and forearm position really affects ulnar nerve injury. And if the patient is having supination during positioning, then there will be a pressure of 22 millimeter of mercury on the ulnar nerve. If patient's hand arm is in neutral position, then there will be 69 millimeter of mercury pressure on the ulnar nerve. And if the patient is having pronation, then there will be a 95 millimeter of mercury pressure on the ulnar nerve. So most important positioning to prevent the ulnar nerve obviously is supination. So as I said, to avoid ulnar nerve injury, supination, most preferred position. First of all, identify high-risk patient, male, extreme of age, habitus, or prolonged immobilization. Next point is avoid direct pressure over the medial humeral condyle, paired with form. Avoid to aim to have forearm on the supinated position like this. Aim to flex the elbow to 45 degree. Don't go beyond 90 degree. And avoid shoulder elevation or abduction beyond 90 degree, and avoid prolonged wrist dorsiflexion. Though your aim is to keep the position hand in supinated position. Next, most common brachial nerve injury is brachial plexus injury, and 20% of all anesthesia-related nerve injury malpractice claims. So vulnerable to injury from stretch or compression, as it has a long course between vertebra and axilla. And positional factors are really important. If the shoulder abduction goes beyond 90 degree, and if arms rotated externally, or posterior shoulder displacement, this all can lead to or are a potential source of brachial plexus injuries. Next point is extension. If the patient is extension or a lateral flexion of the head, there would be a chances of contralateral brachial plexus nerve injury. So how to avoid brachial nerve plexus nerve injury? Avoid shoulder abduction beyond 90 degree. Limit lateral neck flexion to avoid stretch of the contralateral plexus, or avoid head and neck extension. So these we discuss only two nerve injury. So let's discuss head rotation and neck position, which are very important during neurosurgical positioning. Head rotation. So try to keep head position between 0 to 45 degree, because it's well tolerated in this range, 0 to 45 degree. So if you are going to rotate the head towards one side, always place a shoulder roll underneath the contralateral shoulder like this. As I said,
Brachial plexus originate from C5 or T1. If there is extensive rotation on the other side, there is a risk of contralateral uh, side of C5 or brachial plexus on the side of rotation. It's artery blood flow, reduction in blood supply on the ipsilateral side if there is a extreme rotation. So always try to keep the head and neck in 0 to 45 degree. Again, neck position. So this is the Mayfield skull clamps. Mayfield skull clamps. Always avoid hyperflexion or hyperextension of the neck. So try to keep in neutral position. Avoid hyperflexion or again I am repeating hyperextension or hyperflexion, and always try to keep a distance of 2 to 3 finger breadth distance between chin and manubrium sterni or sternum. So this is the best method to keep head in a neutral position by putting a hand or 3 or 4 fingers between chin and sternum. So general points to do the final position. Surgical drapes or warming blankets should not be applied until the final position is approved, and all risk factors points are checked. So at all stages of positioning, the use of continuous capnography and pulse oximeter is recommended. And if there is any chance you need to change or adjust the position, there would be a risk of airway loss or physical injuries, and it should be avoided and is highly discouraged for adjustment of intraoperative positioning. So there are 4 slides need to pad. This is the supine position with a little bit of semi-lateral position. So first of all, bolster or pad underneath the shoulder, padding arm. This is pronation, but you need to, this is wrong. Arm should be in supination position. Then padding between knees and elbows. Neck should be, and head and neck should be in neutral position. There should be a gap of 3 or 4 finger between the chin and the sternal notch. And padding under the heel. This is the supine or again head in the Mayfield skull clamp. So brachial plexus injury to avoid underneath the shoulder, not in the axilla, underneath the shoulder to avoid pressure, direct pressure over the axillary plexus. The second, abdomen, back abdomen support, bottom knee bent, padding between legs, heels, knees, and padding for both upper and lower arms, head in the neutral position. So this is a park bench position. Again, head in that almost neutral position, and you need to check the 2 or 3 finger finger breadth underneath the chin. Again, head in fixed in the skull field clamps, shoulder, chest and abdominal support, protection. Again, padding, heel padding, knee padding, pillow between the legs, bottom leg bent, and properly secured both arms. This is the prone position. Most important points during prone position are to avoid the eye injuries, to keep chest and abdomen free, genitalia and breast free, to keep the chest and breast and genitalia free. These are most important points. So there are again padding, arms along the side, or you can roll upward, avoid pressure on the abdomen, avoid pressure on the male genitalia, breast, arm and knee padding, face pillow with eyes and nose free of compression. So these are most common position during neurosurgery. And thank you.
Thank you so much, Dr. Khurram. Very informative and knowledgeful debate. Now we will invite our participants. If they have any question or comment regarding today's debate on three topics: air embolism, and then positioning, and in between, the topic was Hemodynamic disturbances, hemodynamic disturbance during neurosurgery. neurosurgery in adults. So you are welcome to have question or comment or share your experience about today's topic. Just raise your hand and I will unmute you. You can ask your question or comment. Yes, Dr. Tanveer is here. Dr. Tanveer, do you like to add something? Well, actually, nothing is left to add, honestly. Such a lovely, such a lovely presentation. और ऐसा है कि बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन माशाल्लाह और मेरे लिए तो रिव्यू हो गया क्योंकि काफ़ी अरसे से न्यूरो सर्जरी जो है ना मैंने नहीं की तो मेरे लिए जस्ट एक स्टूडेंट की तरह ये सारा कुछ रिव्यू ही था टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी आई अटेंडेड दिस लेक्चर एंड दैट्स ऑल नथिंग टू ऐड फ्रॉम माय साइड Thank you, Dr. Tanvi. Thank you. Dr. Tanveer, what is going on in UK these days, especially about Corona and COVID? कोविड इज अगेन ऑन सर्ज केसेस इंक्रीज हो रहे हैं और पिछले तकरीबन 8 महीने से यहाँ जो इलेक्टिव सर्जरी है ना वो नहीं हो रही एक्सेप्ट फॉर दी कैंसर सर्जरी या ऐसे नॉन अर्जेंट जो अर्जेंट हेल्थ केयर इश्यूज हैं जस्ट वो एड्रेस हो रहे हैं जो रूटीन की इलेक्टिव चीज़ें हैं वो ऐसे समझें कि पाइल अप हो रहे हैं और अभी क्योंकि विंटर आ गया है स्कूल खुले हुए हैं इकोनॉमी डाउन है और अब जो लॉकडाउन वगैरह वो मेरा ख्याल है इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती तो अब बस यही है केयर करें मास्क पहने और आईसीयू में मरीजों को देखें बस यही रह गया लेट्स सी ऐसे ही है। अब लॉकडाउन वाली पोजीशन तो किसी की भी नहीं है। एग्जैक्टली बस मेरी ज़ाती राय में ये है कि ये जो विंटर है ना ये टफ विंटर होगा तो ये जब विंटर गुजरता है और अगले समर आता है अगली जब यानी तो तब तक मेरा ख्याल है कि जो हर्ड इम्यूनिटी का लेवल होता है प्रोबेबली वो अचीव हो चुका होगा या कोई वायरस में म्यूटेशन हो चुकी होगी या कोई नया ब्रेक थ्रू कोई ट्रीटमेंट में आ चुका होगा या वैक्सीनेशन बस अभी सवाए केयर के कोई चारा नहीं है भाई डेफिनेटली सही मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे जो हमारे कोलीग्स हैं मेडिक्स डॉक्टर्स पैरामेडिक्स उन्हें बड़ी मेरा ख्याल एहतियात की ज़रूरत है ऑलरेडी देखें हमारा कितना लॉस हुआ है बहुत सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो बेचारे उनकी डेथ हो गई और मतलब है कि कितनी टफ सिचुएशन रही है तो हमें बहुत ज़्यादा केयर की मेरे ख्याल ज़रूरत है डेफिनेटली जो हेल्थ रिलेटेड वर्कर हैं पीपल हैं डॉक्टर पैरामेडिक्स ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं और ज़्यादा डैमेज पाकिस्तान में भी नहीं कहीं हुआ है और इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड भी नहीं का इशू ज़्यादा रहा है एब्सोल्युटली ऐसे ही वी हैव अ दूसरा ये है कि मैं क्वेश्चन मेरा ख्याल है जो हमारे ट्रेनी दोस्त हैं हमारे मेरा ख्याल है उन्हें सवाल करना चाहिए बेशक किसी भी तरह का क्वेश्चन फ्रॉम सफीउल्लाह what is the best way of intracranial pressure monitoring especially if done during intraoperatively जी डॉक्टर खुरम
Dr. Khurram? Dr. Khurram, जी. Sorry, I was busy. Acha, the question is, what is the best way of ICP monitoring, especially if done intraoperative? Acha, when they are operating and dura is open, then there is no need to monitor ICP. They can see directly. जब उनको पता चल जाएगा कि पेशेंट ब्रेन स्वेल हुआ है या नहीं हुआ हुआ. If the skull is open, dura is open, then we don't like really monitor ICP. Oh, yeah. Is before either before neurosurgery or operation or after surgery or after neurosurgery, not during surgery. There is no technique to ICP monitoring when the skull is open. Yes. Anyone else? मेरे ख्याल कंटिन्यू करने के लिए चले मैं क्वेश्चन दोबारा पूछ लेता हूँ. जो आप जो न्यूरो रिफ्लेक्स का ये कर रहे थे, इसे अगर काइंडली आप रिपीट कर दें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग तो बड़ा अच्छा होगा. Neuro reflex, sorry. जो रिफ्लेक्स का TCR, आप जिक्र कर trigeminocardiac reflex. या ट्राइजेमिनोकार्डिक रिफ्लेक्स और एटेंड. अच्छा, मैं अभी कोशिश करता हूँ. अच्छा, जब न्यूरो सर्जरी चल रही होती है तो डिफरेंट स्क्रीन शेयर हो रही है जी मेरी जी अब आपके साथ? हो रही है. अच्छा, जब न्यूरो सर्जरी हम कर रहे होते हैं ना, या तो there are a lot of reflexes or a lot of causes of different hemodynamic disturbances. So the most common is trigeminocardiac reflex, या जो मैंने डिटेल में बताई. There are glossopharyngeal vagal reflex, Bizzol, Jarish, venous embolism, irrigation with. अब हर एक पॉइंट की एक लंबी सी डिस्कशन और डिबेट है और डिफरेंट थेरीज हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जो उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं कि इस रिफ्लेक्स की ये वजह हो सकती है. जो सबसे ज्यादा स्टडी हुई है वो ट्राइजेमिनोकार्डियक रिफ्लेक्स है, ठीक है. जो कि हम पहले कहते थे ओकुलोकार्डियक रिफ्लेक्स का भी नाम दिया हुआ है, जो ये स्क्विंट सर्जरी करते हुए बहुत कॉमन है, हर पेशेंट में ही ब्रेडिकार्डिया होता है. जी जी तो डिफाइन उन्होंने इसी तरह ही किया हुआ है, ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन होगी. ठीक है. बाकी जो है पेशेंट यूजुअली क्या कहते हैं सोए होते हैं, एनेस्थेटाइज होते हैं, तो ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन नहीं मिलेगी हमें, या एसिस्टली मिल सकती है. ऑब्वियसली एपनी और हाइपरगैस्ट्रिक मोटिलिटी नहीं मिलेगी. ठीक अच्छा, है. इसकी डिफरेंट टाइप जो क्लासिकली कहते थे कि इसकी 3 टाइप्स हैं. सेंट्रल है जो कि डायरेक्ट ब्रेन के अंदर ब्रेन पेरेन्काइमल स्टिमुलेशन की वजह से होती है. दूसरी है गैंग्लियन, जो इसका पाथवे बनता है. अगर हम ट्राइजेमिनल नर्व का पाथवे देखें जो होता है, तो 3 ब्रांचेस ऑफ थैलेमिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, वहाँ से सारी गिसेरियन गैंग्लियन में एंड अप होती हैं. गिसेरियन गैंग्लियन से थ्रू सेंट्रल नर्व जो है वो 5th नर्व के अपने न्यूक्लियस में चले जाएंगे, पोन्स में या मेडुला ऑब्लोंगेटा में. वहाँ से ये इंटर न्यूक्लियर फाइबर के जरिए जो है वो 10th नर्व वेगस नर्व न्यूक्लियस जो है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं. अच्छा, हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे. सेंट्रल वही कंपोनेंट है विद इन द ब्रेन पेरेन्काइमल अगर स्टिमुलेशन हो रही है, या फिर ये है कि अगर गैंग्लियन के ट्राइजेमिनल नर्व जैसे फेशियल पेन के पेशेंट आते हैं, या तो माइक्रोवास्कुलर सर्जिकल डिकम्प्रेशन होती है, जो परसिस्टेंट पेन होती है ना फेशियल पेन के साथ आती है, उसकी सर्जरी न्यूरोसर्जन करते हैं ये गिसेरियन गैंग्लियन के लिए, उसको डिकम्प्रेस करने के लिए, उसको माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन कहते हैं. अगर ये सर्जरी करते हुए इसकी डायरेक्टली स्टिमुलेशन हो तो फिर भी हमको ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन मिलेगा. या फिर ये है कि हम आई की सर्जरी कर रहे हैं, उसमें ऑफ्थेल्मिक ब्रांच इन्वॉल्व हो जाएगी, मैक्सिलेक्टमी हो रही है या एंट्रोस्टमी हो रही है, या फिर वो लेवॉज कर रहे हैं ईएनटी वाले, या मैंडिबुलर फिक्सेशन के दौरान उसकी स्टिमुलेशन हो जाए, तो उनको उन्होंने ये रखा हुआ था पेरिफेरल हो सकती है, नर्व के गैंग्लियन के लिए हो सकती है, ये सेंट्रल, ये 3 टाइप्स बताई हुई थी उन्होंने. फिर उन्होंने कहा जी नहीं ऐसा नहीं है, अब इसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट है. तो पैरामीटर्स पहली वाली क्लासिफिकेशन में तो उन्होंने कहा था कि हाइपोटेंशन ब्रेडिकार्डिया, उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि
किस वाली में हाइपोटेंशन ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि कुछ केसेस में सिर्फ आपको ब्रेडिकार्डिया मिलेगा, कुछ केसेस में सिर्फ आपको हाइपोटेंशन मिलेगी, ब्रेडिकार्डिया नहीं मिलेगा। तो उन्होंने फिर इसको फर्दर डिफाइन कर दिया कि इसको क्लास का और टाइप का, टाइप वही है फर्स्ट ब्रांच है, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच, और उसमें उसमें क्या ऐड ऑन कर दिया आर्टीरियल से प्रेशर से पहले, तो उसको क्लास ए कह देंगे। अगर सिर्फ हाइपोटेंशन होती है और ब्रेडी नहीं होता तो उसको क्लास बी कह देंगे। तो ये है टीसीआर। वेल आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, लेकिन उससे जो प्रैक्टिकली जो हमने करना है, जैसे इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर ऑफ्थेल्मिक सर्जरी हो रही हो और हमें ब्रेडी मिलता है, तो फर्स्ट थिंग वी डू इज आस्क सर्जन टू स्टॉप। हाँ, आपने सबसे पहले सर्जन को बताना है, और मोस्टली रिजॉल्व हो जाती हैं सर्जन का स्टिमुलस खत्म होने से, मोस्ट ऑफ द टाइम विद इन सेकेंड्स रिजॉल्व हो जाती हैं। अगर फिर भी बार बार हो रही हैं तो आप जस्ट ग्लाइकोपाइरोलेट या एट्रोपिन से लोड कर दें पेशेंट को। तो वेल हाउ ऑफन इट कैन क्विकली लीड टू एसिस्टली? विद इन सेकेंड्स हो सकता है आपको एसिस्टली ही मिले या आपको ब्रेडी और हाइपो ना मिले, विद इन सेकेंड्स ये जाते हैं पेशेंट। मैंने देखे विद इन सेकेंड्स ये पेशेंट रिदम चल रहा होता है, उन्होंने जरा सी ट्रैक्शन किया और वो एसिस्टली हो जाती है पेशेंट की। ओह दैट्स वेरी डेंजरस बिकॉज जी आपका एक्सपोजर क्योंकि न्यूरो सर्जरी में ज्यादा है, इट्स ब्रेड एंड बटर फॉर यू, सो इट्स वेरी हेल्दी डिस्कशन। तो दूसरा इसमें जो ब्रेन पैरेन्काइमल की स्ट्रेच है या जो दूसरे क्योंकि ऑफ्थेल्मिक में तो बड़ा ऑब्वियस है कि ही इज गिविंग अ स्टिमुलस, सर्जन इज गिविंग ट्रैक्शन, ही रिलीजेस, यू कैन ऑब्वियसली सी। लेकिन अगर इस अगर हिडन कोई स्टिमुलेशन है सर्जरी की जो आपकी ऑब्वियस नहीं है और उसके रुकने पे वो नहीं रुकता, इट स्टिल गोज ऑन, then you have to give glycopyrrolate and that's all. Yeah, just release the stimulus and give glycopyrrolate or atropine, whatever you prefer. So it depends on the anesthetist what drug he likes, like either glycopyrrolate or atropine. It's anesthetist preference. Great, thank you Dr. Khurram. जी थैंक यू Back to Dr. Amir. जी थैंक यू। अच्छा, surgeon asks says keep pressure at 90 millimeter of mercury, it is necessary. अच्छा, जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि दो रेफरेंस पॉइंट है, एक राइट एट्रियम का है और एक फोरामन मोनरो या ट्रैगस का पॉइंट है। अगर देयर इज़ अ डिफरेंस तो आपको वो डिफरेंस रखना जो है वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आई डोंट नो क्यों कहते हैं, क्योंकि जब वो सर्जरी कर रहे होते हैं उनका टारगेट होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर up to keep up between 75 to 80, not 90. I don't know why this keeps saying 90 millimeter of mercury. लेकिन जब वो क्लोजिंग कर रहे होते हैं और हीमोस्टेसिस क्योर करनी होती है तब वो कहते हैं कि जरा हाई प्रेशर हमें दे दें ताकि हम हीमोस्टेसिस देख लें। अदरवाइज इफ इट्स 75 to 80. The next question is nerve injury develops in how much time? I don't know how much time. There is no time limit. नर्व इंजरी तो आपको ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगी नर्व इंजरी हो गई। अब टाइम लिमिट आई डोंट नो। रिस्क फैक्टर्स आपको बताएं, रिस्क फैक्टर्स अगर पेशेंट में है तो उनके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, बट टाइम लिमिट आई डोंट नो, आई हैवंट रेड अबाउट दैट। And definitely it depend on multiple factors, on how much pressure is there, and how and the other factors like diabetes and comorbidity. These all factors play a role in development of these injuries. So I think I have also know data review about these things, the time duration in which this such type of injuries develop. Sorry, say again. डॉक्टर आमिर आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि ये आप सही बात कर रहे हैं कि ये टाइम ड्यूरेशन फॉर इंजरी डेवलपमेंट ये कोई कहीं पे कोई डाटा में मिला नहीं है और कहीं हमने भी रिव्यू नहीं किया, क्योंकि इसमें मल्टीपल फैक्टर हैं कि एक पॉइंट पे कितना प्रेशर डेवलप हुआ, कितना उसकी ट्रैक्शन कितनी थी, स्ट्रेच कितना था, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं किया जा सकता और मेरे ख्याल में लिटरेचर में भी कहीं मेंशन नहीं है। नहीं टाइम लिमिट नहीं है मेरा यार जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। या इसमें थोड़ा मैं ऐड कर लूं? यस जी प्लीज। जो एक कॉमन इससे सेंस से जो अंडरस्टैंडेबल है, the longer the surgery, the longer the traction, the longer the pressure over the nerve is, the chances of nerve injury are more. Yes.
Of course, if the pressure is for the brief period of time, chances of nerve injury will be less. So the most important practical point would be, don't forget to have very good padding of the pressure areas, especially जो नर्व इंजरीज कॉमन है जैसे अल्नर है, इन्हें आप बड़े अच्छे पैडिंग से प्रोटेक्ट करें। और दूसरा ये है कि जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस है, उसमें जो पोजीशनिंग है, देयर शुड नॉट बी स्ट्रेच ओवर द नेक और द ब्रेकियल प्लेक्सस। तो बॉडी ओवरऑल एज न्यूट्रल पोजीशन के करीब रहे तो बेहतर। एंड सेकेंडली, यू कैन डू द पैडिंग, दैट्स ऑल यू कैन डू टू प्रिवेंट इट। एंड स्पेशली इन लॉन्गर सर्जरीज लाइक ट्यूमर रिसेक्शन है, या उसमें ये इवन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाउ अबाउट दिस? Yes, definitely. I think no more question or comment. We have to break out at this time, and we'll meet again on next Friday with the new topic on NeuroAnaesthesia. And then in 2-3 lecture of our NeuroAnaesthesia module will be wind up, and then we'll I meet. would like to add on. Yes, yes. अच्छा, शौकत खानम सिंपोजियम शुरू हो रहा है, जो कि 2 हफ्ते ही रह गए हैं तकरीबन। तो आई वुड बी बिजी लाइक विद सिंपोजियम। Okay, तो मैं एक्सक्यूज करूंगा फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। okay, ठीक है। ठीक, तो मैं फिर आपको ज्वाइन करूंगा आफ्टर 2 वीक्स, क्योंकि नेक्स्ट वीक 12 रबीउल अव्वल का है, तो उससे नेक्स्ट वीक हमारा सिंपोजियम है शौकत खानम का। अच्छा, तो चलिए उसमें हम ये नेक्स्ट 2 वीक्स में फ्राइडे में कुछ टॉपिक मिसलीनियस टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, और जो ही आप ठीक हो गया। available होंगे फिर हम इस मॉड्यूल को न्यूरो एनेस्थीसिया को कंप्लीट करके तो नेक्स्ट फिर हम चले जाएंगे उस पे यूरोलॉजी ऑर्थोपेडिक को 3 छोटे छोटे यूनिट्स को मिला के एक मॉड्यूल बना लेंगे। तो ठीक हो गया सर, एक्सीलेंट। ठीक है, So होपफुली हम once दिसंबर again, जी सर, थैंक yeah, once again, Dr. Khurram, thank you very much. Excellent presentation and question आपने बड़े अच्छे explain किए हैं। Thank you for that. और डॉक्टर आमिर, may I suggest, यस यस जैसे पाकिस्तान में जो एजुकेशनल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे डॉक्टर खुरम बता रहे हैं सिंपोजियम हो रहा है, आप MIC में माशाल्लाह काफ़ी एक्टिवली चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उनका अगर आप ऑनलाइन कोई भी ऐसी चीज़ हो ना जिसे हम, इस तरह का फोरम है जिसे ऑनलाइन आप कर सकें, ज्वाइन कर सकें, जैसे वेबिनार होते हैं, तो पिछले 1 ईयर से हम सारे यहाँ वेबिनार ही बस अटेंड कर रहे थे ना ऑनलाइन, तो उसका लिंक शेयर कर दीजिए, उसे हम भी जो है ना पार्टिसिपेट कर लिया करेंगे। हाँ, वो यूजुअली जो मेरे नॉलेज में होता है मैं तो करता हूँ ग्रुप्स में, जो आप भी हैं उन ग्रुप्स में, तो बस दोस्तों को कर रहे हैं हम थोड़ा सा मोटिवेट, और इससे ओरिएंटेशन दे रहे हैं कि इस मीडियम को कैसे यूज़ करना है। अभी हमारे कुछ सीनियर लॉट में है, अभी वो जो है ना टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस का इश्यूज है, तो वो इसकी तरफ नहीं आ रहे, बाकी जो यंगर लॉट है वो तो आ रही है। तो ऐसा ऐसा ये मीडियम जो है वो हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो तो आप ग्रेट, मुल्तान में हमने इस पे डिबेट तो चल रही है कि हम यहाँ पे जो PSA चैप्टर मुल्तान है उसके प्लेटफॉर्म से कोई मंथली इस तरह की एक्टिविटी जनरेट कर लें, तो डेफिनेटली फिर उनको हम ऑनलाइन भी लेंगे। तो ये भी जो डॉक्टर खुरम कह रहे हैं शौकत खानम का सिंपोजियम है, तो होपफुली वो भी ऑनलाइन पहले भी ले रहे हैं, वहाँ से भी आएंगी चीज़ें, तो हम भी कोशिश करेंगे उनके साथ किसी तरह का पार्टिसिपेशन हो सके तो करेंगे इंशाल्लाह। जी जी, बस मेरा ये है कि जो भी एक्टिविटी वहाँ हो रही हो ना, रादर देन कि वो यानी हमें किसी और फोरम पे जाना पड़े, उसका जस्ट लिंक यहाँ पे शेयर हो जाए एज एन इनविटेशन लिंक, आप उस लिंक को क्लिक करें और आप उस मीटिंग में चले जाएं, जी जी, इस तरीके का कुछ हो ना, ऐसे ही करेंगे। तो हर चीज एक सिंगल फोरम के ऊपर जो है ना वो बन जाएगी। और ये फोरम माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, तो जो हमारे सीनियर्स हैं उन्हें भी आप थोड़ा एक यानी अवेयरनेस दे के कि ये बड़ा इजी है अटेंड करना,
दो तीन क्लिक हैं एंड दैट्स ऑल, दे विल बी वर्ल्ड हैप्पी आई थिंक। एनेस्थीसिया डे पे जो हुई थी वहां पे मैंने स्टेज से ही बात की कि ये जो है ना इंतहाई इजी एक मीडियम है, इसको थोड़ा सा आप अगर यूज करने शुरू हो जाएंगे तो फिर आपको बड़ा इजी लगेगा कि आप लेटे हुए हैं अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं और साथ आप चीजों को सुन भी रहे हैं, तो वो होपफुली इंशाल्लाह ऐसा समथिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच, Thank थैंक you. यू Thank वेरी you. मच डॉक्टर Allah आमिर, Hafiz. एवरीवन। एंड गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।